Can you see this? Please create a table and let me know once it is done. Please create a table and let me know once it is done. Please create a table and let me know once it is done. Ranjit is saying done. Sarthak is saying done. Siddharth is saying done. Kushal is saying done. Fine. Please do that. Once it is done, let me know. Sumant is saying done. Sitish is saying done. Arav is saying done. After downloading the Naneshwar is saying done. Fine. Done. Satish is saying done. iPhone is saying done. Fine. Great. So everyone is able to do that. Nice. Next. So the next action is like, okay, see, next thing is that we have the next action is that, see, we have created a table, correct? Where is my table? We have created, where is that screen which I have created? I am not able to see that screen. Where is that screen where I create? Okay, assume that I have created a table, correct? This is the table I have created. Now I want to, this is not the command prompt I'm using this command prompt, correct? So we have created a table. Now assume that I want to know what are all columns are available under the student table. Under the student table, what are all columns are there? See, we created a table, but in future I don't want to, like this query I don't have. If I don't have this query, what I want to do, I want to know the column. If your manager is saying, like, let's take an example, you are sitting idle, you are not doing anything, and when you are not doing anything, your manager will continuously watch you, and what he will say, okay, Ankush, tell me how many columns are there in that student table. How to check? Can you just tell me how many columns are there? What are the columns? Columns means these columns. So there are 4 columns are there. ID is there, name is there, course is there, fees is there. So if I want to know what are columns are there, there is a simple command is there. Describe student. Describe student. Remember one thing, that all the SQL statement will end it with semicolon. Describe. So if someone is asking you how many columns are there in that table, you should say describe. DESC. Describe will tell you how many columns are there. Describe will tell you how many columns are there. So how many columns are there? 2 columns. How many columns are there? 2 columns. 2 columns. 2 columns. 2 columns. Let's do that. Describe table name. Let me know once it is done. So describe will tell you how many columns are there along with their data type. Describe will talk about how many columns are there along with their data type. Describe.
Done? Fine. Now the next thing. So we created a table, but do we have data available under that table? What I mean to say, we created this table. Okay, we have created this table, but we don't have any data available under that table. That's also one problem, right? We have created this table, but we don't have a data available under that table. What is the use of table when we don't have a data in that? You got my point? We have a table, but we don't have data available there, right? So I want to insert a data. What I want to do? I want to insert a data. So we have a table, and किधर गया वो table? अभी तो निकाला था. This is my table, right? We have created a table. Under that table there are 4 columns are there, 1, 2, 3 and 4. But I want to insert some data, so I'll insert first record, second record, third record, fourth record. This record I want to insert. So how to insert a data? How to insert a data into the table? When you want to insert a data into the table, you need to run insert query. Which query you need to run? Insert query. So I'll insert like insert into student. What I want to do? Insert into table name, values. But which values? The value is, first of all, ID. I want to insert ID. What is the ID? 1. Then comma. What is the second? Name. The name is Chetan. And Chetan you need to mention in quotes. Why? Because it is a string. So whenever you want to write down a string, you should mention in quote, single quote. You need to mention in single quote. Then third thing will be your course. Course is also string, right? Oracle DBA. So you need to be mentioning comma separate. So I'll mention Oracle DBA. What I mention? Oracle DBA. Then what is the next thing? The next thing is fees. The fees is 40,000. What is the fees I mentioned? 50,000. The fees is 50,000. Semicolon. What is that? Semicolon. So I mention insert into table name values. But the values should be in sequence. The way it has given, like first is ID, second is name. First is ID is 1, Chetan, Oracle DBA 50,000, and press enter. You need to press enter. The first record has been inserted. Okay, this is the way you need to insert a data. What I want to do? I want to insert a data into the student table. Which table? Student table. So I'll mention 1, Chetan, Oracle DBA. So whenever you are mentioning number, no need to give quote. For number, quote is not required. But when you are giving name, that time you need to mention quotes. Are you able to understand? Everyone? Are you able to understand? Okay? Are you able to understand? Please do that. Okay? Please do that. Please do that. Okay? Are you able to understand? Fine. Please insert a value and let me know once it is done. Please insert a value and let me know once it is done. Let me know once it is done, guys.
dun 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 dun. क्या करें. Is it done? Fine. Fine. Now what I will do, okay, so we have inserted a data. Okay, what I want to do, I want to insert, how many records are there? 3 record we need to insert, second record and third record. So I will insert like this. So I'll say insert into table name, then I'll say values. Values is a keyword you need to mention there. 2 comma Sagar data science 40,000. So I'll mention Sagar comma data science, then I'll mention 40,000. This is my second record, and let me insert the third record. So I'll mention, if you use up you will get the automatic syntax. 3 Nikhil Oracle DB 50,000. 3 Nikhil Oracle DB 50,000. Done. So once it is done, what you need to do? So we have inserted 3 record, but I have inserted a record, but how can I see the record? First of all, what we have done, we have created empty table. Then we have inserted record. हमने क्या किया? Record को insert किया. Then I want to see the data. With my open eyes. I want to see this data. So whenever you want to see a data, you need to write down select command. Select star. What is meant by star? Star means I want to see all the column data. So I'll mention star from which table? Student. Semicolon. When I'm running this command, whatever data which you have inserted, I can see that. Whatever data which I have inserted, I can see. So there are 3 statements we have seen. One is, whenever you want to create a table, there is a create table is there. Whenever you want to insert a data, there is a insert statement is there. Whenever you want to select a data, that time select statement is there. So there are 3 statements are available under SQL till now: create, insert and select. When I mention star means I want to select and I want to see all the column: ID, name, course, fees, all the data I want to see. That is the reason I mentioned star. Are you able to understand?
Are you able to understand? Fine. Please do that and let me know once it is done. हल्लू हल्लू करने का, थोड़ा थोड़ा बोलने का. हल्लू हल्लू करने का, थोड़ा थोड़ा बोलने का. Let me know once it is done. Can you guys connect tomorrow by 12 p.m.? Is it possible? 12 p.m, 1 p.m, 11 a.m, सुबह 12 बजे. सुबह 12 नहीं होता है सुबह. Is it possible? Are you guys no किधर बिजी होते हो आप लोग सुबह? वी हैव अ कॉलेज. ओके, यू गाइज हैव कॉलेज, स्टिल कॉलेज. अच्छा, कॉलेज होता है क्या? वैसे भी कॉलेज में क्या पढ़ते हैं आप लोग? कुछ पढ़ते हो क्या? हाँ, कॉलेज में क्या पढ़ते हो? अटेंडेंस के लिए जाते हैं लोग. अच्छा, टाइम जोन इशू है. अरे बापा, टाइम जोन कौन से कंट्री से हो? टाइम जोन एक बहुत बड़ा वर्ड है. वो सुनने के बाद में एकदम से मेरे को लगा हम गरीब लोग हैं. ऑफिस है? अच्छा, फालतू जाके देखिए. प्लेसमेंट ड्राइव है सर. अच्छा, 10 to 5 की. हम कौन से कॉलेज से है तुम लोग? कौन से कॉलेज से? ऑफिस रहता सर. अच्छा, ऑफिस वाले का समझ सकते. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो यार वेस्ट ऑफ टाइम है वो. जब भी मेरे को एमपीएससी और यूपीएससी मिलते ना, तब मैं समझ जाता कि कुछ ही नहीं कर रहे. 4-5 साल वेस्ट करेंगे, फिर ओरेकल डीबी का ट्रेनिंग लेंगे. तो अब हमारे टाइम पे क्या होता था, मतलब मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ. जिस बंदे ने ऐसा बोला कि मैं एमपीएससी कर रहा हूँ या फिर यूपीएससी कर रहा हूँ, समझ लो ये वेल्ला है, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये टाइम पास कर रहा है. इसको जिसने भी ये बोला, वो होता है ना, जब हम शादी के लिए, जब हम लड़की देखने के लिए जाते शादी में, अरे शादी में नहीं जाते यार, जब हम अरे अब एक एग्जाम्पल बता. जब तुम्हारी शादी की उम्र होगी ना, और उसके बाद में तुम लड़की को पूछोगे कि भाई तुम्हारी लड़की क्या करती है, तो वो क्या बोलेंगे? वो एमपीएससी की तैयारी कर रही है. तो समझ लेना उसको जॉब नहीं लगेगा. अब ये हुआ अभी का पैटर्न. ये कौन सा पैटर्न है? ये अभी का पैटर्न है. अब पुराने पैटर्न में क्या होता था? पुराने मतलब जब हमारा टाइम था, अगर किसी ने ये बोला कि लड़की MSCIT कर रही है, हमारे महाराष्ट्र में MSCIT होता है वो, सो दैट टाइम समझ लेना कि कुछ भी नहीं कर रही है. तो अभी नया पैटर्न जो है ना, वो एमपीएससी यूपीएससी वाला चल रहा है. अगर किसी ने बोला मैं एमपीएससी यूपीएससी कर रहा हूँ, तो समझ लेना कुछ भी नहीं कर रहा. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड गाइज? ठीक है. इज इट डन? लेट मी नो वंस इट इज डन, दिस पार्ट. इफ यू आर एबल टू see this output, let me know once it is done. Done. Fine. If you make a mistake while inserting data, how to correct it? मिस्टेक करने का ही नहीं फिर, और मिस्टेक किया तो फिर करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट करने के लिए वे है. आई विल टॉक अबाउट दैट. फाइन. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट. क्या देखना है आपको नेक्स्ट? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट. सी, whenever you are running the SQL command, whenever you are talking about the SQL commands, SQL command are divided into the multiple part. Like बहुत सारे पार्ट है उसमें. जैसे we have DML is there, we have DDL is there, we have TCL is there,
we have DQL is there, and we have DCL is there, DCL. सबसे important जो होता है वो होता है DML. DML means DML contain the statements like insert, update, and then delete. Remember this. What DML contain? DML statement is like a data manipulation language which are making changes to the Oracle database. So DML contain insert, update, delete. Insert, update, delete. These are all DML statement. So whenever you run DML statement, you need to use a command called commit. Which command you need to run? Commit and rollback. So commit and rollback is only applicable for DML statement. DML statement means let's take example insert. What we have done now, just few minutes back, we have inserted some data. So whenever you are inserting some data, is it a permanent change? No. When you are inserting some data, let's take example, I have inserted a data. But if I open a new command prompt, let's say I'm opening new command prompt and I am trying to select a data. See, I have opened new command prompt. See, this is my new command prompt, right? I am getting connected to the Oracle database, same database. I am getting connected to the same database. And now I am firing select star from student. So how many record I can see? If I do select star from student, how many record I can see? We have inserted data, right? So how many record I can see? I can see, some people are saying 3. So when I'm pressing enter, I got the message that no row selected. Why? Why no row selected? We have a data there, right? Why it is saying no row selected? Because whenever you are doing insert or update or delete, after that you need to make that changes permanently, and that is possible with the help of commit. When you fire commit, the changes will be permanent. Now if I go to the second prompt and if I run the same command again, now I can see all the record. What does it means? Whenever you are doing insert, after that you need to commit it to say that this is a permanent change. Not only just insert, whenever you are running any DML statement, what are all DML statements we have? Like insert, update, delete. Whenever you run insert, update, delete, you need to make that changes permanently. Permanently means if you are coming after 100 years also ना, मरने के बाद भी अगर आप वापस आए ना, फिर भी आपको वो टेबल के अंदर डेटा मिलेगा जब तक उस टेबल में कोई उंगली नहीं करेगा. Are you able to understand? Are you able to understand? So whenever you are doing insert, update, delete, you need to do commit. 100 साल के बाद भी आपको डेटा मिलेगा. 100 साल के बाद भी, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आज डेटा इंसर्ट करो, 100 साल के बाद में आप लैपटॉप ऑन करके देखना, आपको स्टूडेंट टेबल में 3 रिकॉर्ड दिखेंगे. क्लियर? हु इज रेडी? डॉक्टर विनय कुमार ज्वाइन. बापा, वाई डॉक्टर इज ज्वाइनिंग बॉय? ठीक है, जान दो. डॉक्टर लोगों को पैसा नहीं मिल रहा क्या? Let me know once it is done, guys. Insert a record and then fire commit statement. Which statement you need to fire? Commit. Commit you need to fire. Which statement you need to fire? Commit. किसका फुल फॉर्म बताओ? किसका सर? सबका? अच्छा, डीएमएल का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डीडीएल का लॉन्ग फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. टीसीएल का लॉन्ग फॉर्म है क्या? लॉन्ग फॉर्म है रे टीसीएल का?
क्या लॉन्ग फॉर्म है रे, क्या लॉन्ग फॉर्म है TCL का? ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज, DQL का डेटा क्वेरी लैंग्वेज. So in DQL this select statement is coming, data query select, we fire that command, right? Select star from table name, that will come under DQL. DCL will have grant, commit, grant and commit will come under DCL. And what are all DDL statements are there? Like create table, like create table, drop table, alter table, truncate table. These are all things will come under DDL. So we are going to learn all these SQL statement in our future classes. We are going to learn all these SQL statement in future classes. Is okay? So today what we have done, we have created a table. Okay, I'm going to give you one assignment now. Let's do one thing. Let's create a table called EMP. Let's create a table called EMP. Under this EMP, I want EMP ID, EMP name, salary, okay, and department. These 4 records should be there. And okay, let me see how to uh, 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 and you want to know the data also, right? Okay, let me do one thing. Let me use something. Fine. Now if I'm going to the notepad, I want to see the data like this. Let me show you. Okay, let's create a table employee, and I want the data like this. So you need to show me this result by tomorrow like this. Which table? Employee. Table name is employee, EMP, and show me the data like this. Okay, remove this dot 0 that I don't want as of now. Okay. Will you be able to do that? Will you be able to do that like this? देखो कितना मैं रंगोली निकाल रहा तुम्हारे लिए. Will you be able to do that, guys? Take a snapshot. Take a snapshot and show me by tomorrow. Take a snapshot and show me by tomorrow. Okay, take a snapshot and show me by tomorrow. Within single insert query, you cannot insert all the records. Okay, is it done, everyone? समझ में आया क्या? Please take a snapshot. If you want, I can show it in. Okay. Okay. Done, guys.
अच्छा, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? कभी कभी मेरे को लगता है ये क्लास अगर 8 से 9 रहती थी या फिर 7 से 8 अगर रहता था तो और मज़ा आता था, क्योंकि 9 से 10 में ना वाला आदमी की जान ही निकल जाती है। सोचता हूँ कि इतने टाइम तक नहीं रह सकता। पहले मैं जवान था तो बहुत टाइम तक क्लासेस लेता था, अब साला उम्र हो चुकी है मेरी, अब होता नहीं है ना। सो 9 to 10 रखने के पीछे का एक ही रीज़न था कि बहुत सारे लोग कॉलेज वाले हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस वाले हैं, आप लोग हमेशा बिज़ी रहते होंगे, हम लोगों को कौन सा काम है। मैं तो जॉबलेस ही हूँ, पहले मैं काम करता था, अब तो मैं जॉबलेस ही हूँ। मैं जॉबलेस हूँ तो फिर मेरे पास में कोई काम नहीं है, और मेरे पास कोई काम नहीं है तो फिर मैं इधर ही आता हूँ आप लोगों के साथ में मिलने के लिए 9 से 10। लेकिन ये 9 से 10 के चक्कर में ना अभी बहुत कुछ खो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बहुत कुछ खो लिया मैंने। जैसे एक एग्जांपल, अभी मेरे दोस्त का मैसेज आया कि अंडा भुर्जी खाने के लिए चलता क्या, तो मैंने उसको बोला नहीं यार, मेरा 9 से 10 का क्लास है। तो उसने मेरे को गाली मारी कि तू साले पैसों में मर। अब उसको क्या पता ये पैसों वाला बैच थोड़ी है, ये तो फुकट वाला बैच है, इसमें कहाँ पे पैसा मिलेगा। तो जो भी है, लेकिन मज़ा आता है। मज़ा और भी कब आता है पता है कि आ, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब जैसे मेरे को पहले बहुत मज़ा आता था। पहले मतलब अभी भी मज़ा आता है ऑब्वियसली, राइट, बट पहले स्टार्टिंग में एकदम से हज़ार हज़ार लोग रहते थे, थोड़ा थोड़ा करते करते लोग कम कम होते जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि साला एक तो हम अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, या फिर दुनिया ही ख़राब है, और दुनिया कोई फुकट में पचाने की हिम्मत नहीं है। सब समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, है ना। सो यही है दुख का, है ना। तो अभी एक बात बताओ, एसक्यूएल अच्छा है कि लिनक्स अच्छा है? क्या अच्छा है, एसक्यूएल अच्छा है कि लिनक्स अच्छा है? आधे लोग बोल रहे एसक्यूएल अच्छा है, आधे लोग बोल रहे लिनक्स अच्छा है, कुछ कुछ लोग बोल रहे दोनों अच्छा है, उसमें से कुछ लोग बोल रहे आप ही अच्छे हो। अरे मेरे को अच्छा मैं तो वही अच्छा सो हम रहे या ना रहे, हम साथ में रहे या ना रहे मतलब मैं तो रहूँगा ही आप भी अपनी जगह पे रहो। आ, तो एक बात तो मैं आप लोगों को श्योर शॉट बोलता हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना, ओके, जो भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको लिनक्स में सब कुछ पढ़ाया या फिर 100% पढ़ाया, लेकिन जो भी मेरे को आता है, वहाँ पे जो भी आपने पढ़ा, और वो लाइफ लॉन्ग आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, लाइफ लॉन्ग, ओके। आप मानो या ना मानो, जब आपको जॉब मिलेगी ना, जब भी आप इसमें से कुछ बच्चे जब 20-30 हज़ार से स्टार्टिंग करेंगे, कुछ 10 हज़ार से करेंगे, और जब वहाँ पे आपको एसक्यूएल एंड लिनक्स का काम पड़ेगा तो मेरे को याद करना, याद करोगे आप, मैं हमेशा बोलूँगा। तब आपको लगेगा कि हाँ यार, वो बंदा जो सेम टी शर्ट पहन के आता था ना, वो बोलता था कि ये काम में आएगा करके। जब आप इंटरव्यू के जाओगे और वो बोलेगा कि आपको क्या आता है, और जब आप उसको बोलोगे कि हाँ मेरे को एसक्यूएल आता है, मेरे को लिनक्स आता है, एंड वो फिर एसक्यूएल एंड लिनक्स के ऊपर जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तब आपको याद आएगा कि हाँ वो वही बंदा है जो सेम टी शर्ट में आता था, एंड वो बोलता था हमेशा कि काम में आएगा करके, है ना। सो टेक द थिंग्स पॉजिटिवली, ओके। बहुत लोगों को क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ हम लोग सिर्फ ब्रांडिंग के लिए तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रांडिंग के लिए नहीं कर रहे हैं,
हाँ, इसमें एक और भी मोटो है कि ब्रांडिंग तो ऑब्वियसली सबको चाहिए यार। मेरे को भी पेट है, और मेरा पेट तो ज़्यादा ही बड़ा है, आपसे भी बड़ा होगा, कुछ कुछ से कम होगा लेकिन बड़ा है। सो इसमें दोनों का फ़ायदा है। दोनों का फ़ायदा कैसे? जिनको फ्री में सीखना है वो फ्री में सीख रहे, जिनको और अच्छे से और आगे जाके पढ़ना है, जैसे बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को इंक्वायरी की है कि हम लोगों को ओरेकल डीबीए पढ़ना है, कि भाई अभी कुछ लोग पास आउट हुए हैं, कुछ लोग पास आउट होने वाले हैं, तो वो लोग अपना करियर ओरेकल डीबीए में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये लोग हम लोगों को इंक्वायरी कर रहे हैं एंड दे आर ज्वाइनिंग। बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी आए, तो बढ़िया है ना। हम कौन से तुम्हारे घर पे आ रहे कि एडमिशन करो ही करो करके। सो दैट्स द मैटर। ओके, वी नीड टू सी द वर्ल्ड पॉजिटिवली। थोड़ा सा पॉजिटिवली देखो दुनिया को, तो तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, और यही है ना। तो बढ़िया है। बाकी 10 बज चुके हैं और मैसेज भी आ चुका है कि खाना खाने के लिए आते नहीं क्या। तो अब बताओ, तुम्हारा साथ छोड़े कि उनका साथ, उनके साथ के लिए चले? उनका और हमका तो जन्म जन्म का साथ है, तो उनको लेके जाना ज़रूरी है ना। आप लोग क्या, और 4-5 दिन 10 दिन जितने भी टाइम हो लिनक्स तक के हो, आपका एक बार काम हो गया तो आप चला जाओगे मेरे को छोड़ के। मेरे को तो इनके साथ ही रहना है। सो विल डू दैट। ओके, let's take a things seriously, and we are going to, I'll make sure that you